A hearty good afternoon to everyone, and welcome. A good morning to everyone, and welcome to a session on the topic of nutrition in children. We are pleased to have Dr. Ankush Khanna among us to educate us on this topic. With his experience in pediatrics and in neonatology, Dr. Ankush is the best person to educate us on the essential nutrition in children. We are pleased to have him as our esteemed guest to shed some light on the topic. Doctor, you have the stage. Hello, everyone. This is Dr. Ankush Khanna, and today we are going to discuss a very important topic, which is nutrition in children. And I've discussed this topic 2 years back also from Apollo side only, and at that time we discussed it in parts, and now we want to discuss it as a whole because this is very important topic, and it's not only important at an individual level but also for the society as well as for the whole country, because ultimately it's just the nutrition which builds up a person, and an individual builds up the society and the country. So I'll try to make it very simple and in the vernacular language so that all of us can understand it, and then we can also take up some questions in case we have any. So we'll start with what is nutrition and what are its benefits. So simple language में nutrition, of course, जो भी पदार्थ हम खाते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हम अपने बच्चों को जो पदार्थ देते हैं, जो चीज़ें देते हैं, सो दे कंस्टिट्यूट द न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। एंड इसकी नॉलेज होना ज़रूरी क्यों है? इसकी नॉलेज होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ठीक चीज़ें देते हैं तो उनका ग्रोथ ऑप्टिमल होता है। ऑप्टिमल मतलब जितना बेस्ट होना चाहिए उतना होता है, और अगर हम वो चीज़ें अच्छी नहीं देते हैं, ठीक से नहीं देते हैं, तो उनका ग्रोथ सब ऑप्टिमल होता है, उनका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो पाता है, उनको अलग-अलग तरह की बीमारियाँ लग सकती हैं, उनका मेंटल एंड फिज़िकल डेवलपमेंट उतना नहीं हो सकता है, जितना वो अचीव कर सकते हैं, अगर हम उनको अच्छा खाना दें। तो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट न्यूट्रिशन, एंड इट्स जनरल कंसर्न ऑफ मदर्स जिनको न्यूट्रिशन के बारे में बहुत नहीं पता होता है, एंड ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड कि न्यूट्रिशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए। So we'll start with the most important part, which that उसका मेंटल डेवलपमेंट पे न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट डलता है। So first 3 years of life are very important as far as nutrition is concerned and mental development is concerned, because पहले 3 साल में बच्चे का ब्रेन 90% डेवलप कर जाता है। So जो हमारे यहाँ सभी टॉपर्स हैं या यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं, दे हैव बीन केयर्ड फॉर वेरी वेल इन द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल वांट फॉर आवर चिल्ड्रन। तो पहले 3 साल में अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए तो डेफिनेटली द ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन मेटाबॉलिज्म एंड ब्रेन फिजियोलॉजी इज मच बेटर दैन अदरवाइज। सो ये सब बेनिफिट्स हैं एक अच्छा एंड होलसम न्यूट्रिशन देने के बच्चों को। सो नाउ विल स्टार्ट स्टेप वाइज के जैसे हमारे को बच्चे की केयर करनी चाहिए, उसकी न्यूट्रिशन की क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो ऑफ कोर्स द न्यूट्रिशन स्टार्ट्स राइट बिफोर द बर्थ। अगर मदर अपना अच्छे से केयर करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चा का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो वूम में ही अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स द ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन द वूम इटसेल्फ। सो जो न्यूट्रिशन है वो बर्थ के बाद नहीं, वो बर्थ से पहले ही उसका केयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो मदर्स शुड टेक अ वेरी हेल्दी डाइट, and you should of course consult your obstetrician for the same advice on the diet. 300 extra calories per day लेनी होती हैं। You have to take folic acid उसके अलावा your doctor would also guide you if you are deficit in any particular vitamins and you need some other supplements also. Regular exercise is also must, and of course not very heavy exercises but moderate exercises. Alcohol and tobacco consumption is a big no-no if you want your child to grow the best. They are teratogenic, they can cause a lot of side effects to your child.
So pregnancy के दौरान you cannot take these things, but other than that, of course, green leafy vegetables, fruits, and a lot of legumes and proteins in the form of dairy and eggs. These are considered to be very healthy, and in right proportions, if they are taken, then मदर का हेल्थ भी अच्छा रहता है और होने वाले बच्चे का हेल्थ भी अच्छा रहता है. Then next thing what we talk about here is कि एक बार बच्चे का बर्थ हो जाता है तो what is the best thing we can do for the children. So and what nutrition is recommended for children now. So once a child is born, of course, and many of us do know it, okay, breastfeeding is the best option for the child, and the trend is changing nowadays. Many of the doctors, even uh, uh, parents discourage breastfeeding, which is very wrong. कोई भी फॉर्मूला फीड चाहे जितना भी अच्छा हो, कैन नॉट मैच ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल तरीका है उस, और किसी भी फॉर्मूला फीड से या किसी भी तरह के दूध से बेटर है ब्रेस्ट फीड करना बच्चे को. दैट इज़ द बॉटम लाइन. देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दिस एनी फर्दर. एक एक चीज़ जो बेस्ट है बच्चे की हेल्थ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, वो डेफिनेटली उसका मदर फीड लेना है. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मदर फीड टू द चाइल्ड ओवर एनी अदर काइंड ऑफ फीडिंग. डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे के लिए बेनिफिट्स होते हैं. उसका ब्रेन डेवलपमेंट बेटर होता है, IQ बेटर होता है लेटर ऑन इन लाइफ. द chances of developing various kind of allergies also decrease later on in life if the child is breastfed in infancy. एस्थमा के चांसेस कम होते हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेस के चांसेस कम होते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस कम होते हैं, कैंसर के चांसेस कम होते हैं. देन of course the physical health also grows better, and the weight gain is also better when the child is breastfed. And last but not the least, the chances of infections are reduced. India mein it's proven that if the child is breastfed, the chances of respiratory as well as the GI infections, जिसको डायरिया आप कह सकते हैं कॉमन वर्ड्स में, इनके चांसेस भी कम हो जाते हैं. इसकी वजह से मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है. सो दैट इज़ द बॉटम लाइन कि बच्चे को इतने सारे बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीड कराने के. देन ऑफ कोर्स बच्चे और मदर का बॉन्डिंग बेटर होता है. मदर के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इफ़ शी ब्रेस्ट फीड्स अ चाइल्ड, उसके लेटर ऑन इन लाइफ ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस मदर के कम हो जाते हैं. She can reduce her weight better if she is breastfeeding her child, and a lot of diseases also reduce in the mother, including the postpartum depression and PPH also. It also helps in the contraction of the uterus through the prenatal size. So mother के लिए भी बहुत सारे benefits हैं, and of course there are social benefits of breastfeeding also, because इसका there's no cost, unlike the formula feeds, which are generally quite costly for most of our people. And secondly, of course, social benefits that uh, it is of course readily available, and it's sterile, and infection के chances कम रहते हैं. So there's no doubt in this that breastfeeding is the best option for our children. अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है इन मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, दैट इज इंडिया में इतना अवेयरनेस नहीं है. दे फील दैट काउज मिल्क इज इक्वली गुड, एंड मेनी ऑफ द चिल्ड्रन आर गिवन काउज मिल्क थिंकिंग दैट आज से 20 साल पहले हमारे बच्चे तो काउज मिल्क पे पले हैं और बड़े अच्छे पले हैं. दैट्स व्हाट द जनरल वर्डिंग ऑफ द पेरेंट्स इज. So this is not true. The child won't gain his best potential अगर हम उसको काउज मिल्क देंगे. प्लस कई बार बहुत सीवियर इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो इवन इन इंडिया एज वेल एज इन वेस्टर्न कंट्रीज अब्रॉड, 1 साल तक तो काउज मिल्क इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. So it can cause various kind of allergies, cow's milk protein allergy, and a lot of other side effects. उसमें कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो भी बच्चे के हिसाब से ठीक नहीं होता है. So it's not human milk, and it's not at all recommended.
So we'll also consider the case of preterm babies here. So preterm babies के लिए भी बच्चे के लिए माँ का दूध इम्पोर्टेंट होता है, रादर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. Every drop of it is very important for preterm babies because it helps to protect the preterm babies from infections and helps in the best growth of the preterm babies and helps them to achieve their best potential. So जो preterm babies हैं उनके लिए भी मम्मी का दूध बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड सो डोंट थिंक कि हमारा बेबी प्री टर्म है तो उसको ज़्यादा दूध की ज़रूरत है तो हम फॉर्मूला फीड या कोई और दूध देना चाहिए. अब इसमें एक और चीज़ विच आई लाइक टू स्ट्रेस इज दैट अ लॉट ऑफ मदर्स फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड they discuss it with us or with the lactation experts or with the gynecologist on a routine basis only that they don't have enough feed or they have cracked nipples or they have sore nipples or then there can be other kind of problems like they may have pain in the breasts or abscess. So uh, the only thing is to discuss these problems with your lactation expert or with your doctor, but do not easily give up on breastfeeding. It's easy to give up on breastfeeding, but it has long-term consequences. And so, अगर feeding कम आ रहा है, rest assured अगर आप डॉक्टर से और अपने lactation expert से consult करेंगे तो 90% cases में this can be taken care of. स्पेशली कुछ बेसिक सी ग्लाइकोलॉग दवाइयाँ आती हैं जिनसे थोड़ा बहुत फीडिंग ऑगमेंट हो सकता है. बट अदर देन दैट टेकिंग लेस स्ट्रेस, ईटिंग हेल्दी वेजिटेबल्स, डूइंग a moderate amount of exercise, and of course breastfeeding the child on regular intervals properly helps in augmenting the breastfeeding. Breastfeed increase करने के लिए simple तरीके हैं. And of course, if you have pain or abscess or swelling in the breast, then there are also some medications plus hot and cold fomentations would help, and expression of milk would help, and then painkillers can help, or simple cracked nipples where you can just apply colostrum and that can also help. So few things are there which can help, but the bottom line over here, which cannot be overemphasized, is that most of the things can be taken care of very easily. You just have to seek help. Uh, just remember, breastfeeding is not that easy as it seems to be. It's a new skill that you have to learn, and you have to take proper help for learning that skill. So आप एक बार वो लैक्टेशन एक्सपर्ट से, डॉक्टर से अच्छे से स्किल सीखिए, अपने स्टाफ से, नर्सेस से. एंड हेयर इन ऑल अपोलो ऑल्सो वी गिव प्रॉपर ट्रेनिंग टू मदर्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एंड देन ओनली दे आर एबल टू डू इट. तो एक बार अच्छे से सीखना है, एंड देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू हैव टू tackle those problems and do not give up on breastfeeding. You have to continue breastfeeding the child. सो अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग. हमने एडवांटेजेस की बात की, एंड वी हैव आल्सो टोल्ड दैट हमने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराया. तो कब तक करना है, दैट इज़ व्हाट मोस्ट ऑफ द मदर्स आस्क. अब हमने अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड, आइडियल रिकमेंडेशन इज मिनिमम 2 years. यू डोंट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग बिफोर 2 years, एंड दैट्स व्हाट द आइडियल रिकमेंडेशन इज. अब इसमें एक और प्रॉब्लम जो कॉमन आती है, सो आई एम generally discussing the common problems also side by side जो mostly OPDs में पूछी जाती है हमसे, and so this is to redress those problems जो generally mothers को होती हैं. So the most common problem over here is कि हमें काम पे जाना होता है, and बच्चे को बाद में आदत नहीं रहेगी बॉटल वाले दूध की, तो हम बच्चे को थोड़ा बहुत फॉर्मूला फीड करा देना चाहते हैं, एंड बाद में काम के टाइम पे हम कैसे बच्चे को मदर फीड दे पाएंगे. सो दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस. अब इनके भी सिंपल आंसर्स हैं. देयर इज नथिंग लाइक दैट कि बच्चे को बाद में आदत नहीं होती है अगर हम बच्चे को पहले मदर फीड देते हैं, एंड सो दिस इज नो रीजन टू स्टार्ट फॉर्मूला फीड बिफोर स्टार्टिंग द मदर्स फीड, and replacing the mother's feed with formula feed due to this reason is totally illogical, because just remember that mother's feed is best, and जितना आप उसको formula feed या किसी भी और तरह के दूध से replace करेंगे वो बच्चे के लिए नुकसानदायक ही है. And
वर्किंग मदर्स के लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं? सो वर्किंग मदर्स जाने से पहले फीड करा सकती हैं। दे कैन एक्सप्रेस देयर मिल्क एंड कीप इट इन द फ्रिज। जनरली रेफ्रिजरेटर में दूध 1 दिन तक तो नहीं खराब होता है। इवन आउटसाइड इफ द टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी वार्म, तो 6 आवर्स तक का दूध जनरली मदर का नहीं खराब होता है। तो यू कैन जस्ट कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर एंड देन लेटर ऑन warm it and give it to the child. And once the mother comes back from the work, she can again breastfeed the child. या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में एंड नाउ डेज ऑल्सो इन आवर कंट्री हरियाणा रूम्स अवेलेबल हैं, स्पेशल ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारे वर्क प्लेसेस पे, एंड देन they can be taken care of in these rooms also, your children. So working mothers, it's a, of course it's encouraged for the women to work, but they can of course take care of the children and breastfeed the children even when they are at work. And next thing we'll like to talk about here is complementary feeding, or what uh, most of the children take after 6 months of age. अब इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आती हैं कि व्हेन डू वी स्टार्ट वीनिंग ऑफ द चाइल्ड. नाउ दिस इज नॉट वीनिंग ऑफ, बेसिकली हम मदर की फीड को वीन ऑफ नहीं कर रहे हैं. वी जनरली कॉम्प्लीमेंट द मदर्स फीड. मतलब 6 महीने के बाद इट्स नॉट दैट हमें मदर को कहना है कि अब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कम कर दें और उसको और चीज़ें दें. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. यू give the mother's feed definitely, and you continue with the breastfeed, and then you add on certain foods which are also referred to as the complementary foods. So अब हम 6 महीने के बाद कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं. बट बिफोर वी डिस्कस दैट, वील ऑल्सो डिस्कस कि हाउ टू असेस दैट हमारा बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड ले रहा है कि नहीं ले रहा है. सो देर आर सिंपल indicators. The first one is urine output. In the first few days of life, the child may actually lose weight. In the first 10 days, term babies and preterm babies in the first 15 days would lose weight, which is normal. And after 15 days, they'll gain the weight back to the normal weight. तो उसके बाद adequate weight gain should be there. How much is the adequate weight gain? 20 grams per kg per day at an average, and then of course it depends on the child. उसका term है या pre-term है और उसका weight है कितना. So it depends on that thing also, but take this to be an average. And secondly, the other indicator which is important is urine output. If the urine output is good, it's more likely that the child is hydrated properly and taking breastfeed also properly. So this is something which needs to be taken care of. प्रीटर्म बच्चों में अगर हम न्यूट्रिशन के अलावा एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं, दैट इज़ कैंगरू मदर केयर, KMC. बच्चे को मदर के चेस्ट से लगा के रखना होता है. इवन फादर और ग्रैंड मदर कैन गिव कंगारू मदर केयर, एंड देन this KMC is very very beneficial for the child. It helps in the weight gain of the child and brain development of the child, preventing apnea, and improves the respiration and GI development of the child. So these are few things that need to be taken care of in the preterm babies. ये बिना दवाई के अगर हम सिर्फ KMC और फीडिंग ठीक से कराते हैं तो preterm babies grow very well. So of course now we'll discuss a very important topic, which is complementary feeding, as we were discussing. तो 6 months के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना होता है. बट आजकल मदर्स 4 महीने पे पूछना शुरू हो जाते हैं कि हम क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इट्स नॉट रिकमेंडेड एट 4 months. Even in the Western countries, they take time to start the complementary feedings. Even in US or European countries, they start complementary feeding after 5.5 months at least. So you start with a few things like जो इंडिया में you can start with dal. Now dal is not dal ka pani. Generally the doctor say dal ka pani start karo. Pani is just water, so you don't start with dal ka pani. You start with proteins. That is mashed dal. It of course cannot be solid. It cannot be watery also. It has to be a puree type of dal. सेमी सॉलिड, जो बच्चे के गले में भी नहीं अड़े और जो बच्चा इजीली ले भी ले और उसको उससे प्रोटीन भी मिले.
सो 6 मंथ्स पे हम धीरे धीरे करके अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स विच वी कैन इंट्रोड्यूस एट 6 मंथ्स ऑफ एज, और हमें सभी इंट्रोड्यूस करने चाहिए आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज, वन आफ्टर अनदर. एंड सभी फूड ग्रुप्स कवर अप कर लेने चाहिए. व्हाट आर द फूड ग्रुप्स दैट कैन बी इंट्रोड्यूस टू द चिल्ड्रन? वही जब जो चीज़ें हम सब खाते हैं, दीज आर एवरीथिंग दैट वी नीड टू गिव टू द चाइल्ड, जिसमें pulses, legumes, and chane and everything can be introduced. And then vegetables, every kind of vegetable, seasonal vegetables, all kind of vegetables can be introduced. Fruits, any fruits which are available in your place. Of course, don't bother about very exotic fruits or something. Just simple fruits are very good for the child. Then cereals are very good for the child, and then of course you can introduce dairy products also, and then in case you want to introduce non-veg, after 1 year egg is recommended. So generally before 1 year egg and nuts can cause some allergies, so can be avoided. अब ये सारे फूड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करने हैं बारी बारी से. जनरली स्टार्ट विद dal and vegetable soup and khichdi. These are a few things which are very very important. And सो हमें तीनों मैक्रोज देने होते हैं चाइल्ड को. मैक्रोज, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. 30% के आसपास प्रोटीन्स, 20% के आसपास फैट्स एंड 50% कार्बोहाइड्रेट्स. सो हाउ डू वी मेक अप फॉर ऑल दीज थिंग्स? बाय इंक्लूडिंग डाइवर्स वैरायटी ऑफ फूड्स जो हमने अभी आपको बताए. उसके बाद वील ऑल्सो टॉक अबाउट कि हम कितनी बार बच्चे को खाना देंगे. सो यू स्टार्ट विद 2 to 3 times a day. एंड देन जब बच्चा 9 से 11 महीने के बीच में है, वी कैन इंक्रीज इट टू 3 to 4 meals a day. एंड आफ्टर 12 months, after 2 years, you can increase it up to 3 to 4 meals plus 3 snacks a day. And of course, you have to continue with the breastfeeding. And that is the frequency. Now we'll talk about the amount that needs to be given to the children. Amount, 6 to 8 months may you can just give a few teaspoons, 1/3 of a cup. If you take the cup to be about 250 ml, 1/3, or even a few teaspoons should be fine. 9 to 11 months, half of a cup at a time. And after that, above 12 months, up to 2 years of age, you can even include a full cup in each meal. Another concept which is also good is baby led feeding. मतलब अपने बच्चे को अपने साथ बिठाइए, and especially after 9 months of age, and let him choose what things he wants to eat. Fussy eater बच्चे बहुत होते हैं who don't like to eat, and that's also very general complaint of the parents. तो उसमें you cannot force the child to eat some things. There are a few ways you can follow to change such behavior of fussy eater children. उनको डांट नहीं सकते, because उनको डांटेंगे तो they'll get more fussy. You have to make them sit with you. You have to let them choose their foods. You have to give them a variety of foods. अलग अलग कलर्स के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उनके छोटे छोटे पोर्शंस में उनके प्लेट में रखें, तो दे वुड प्रेफरेबली चूज देयर ओन फूड. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. प्रॉबेबली एक नए फूड को एक्सेप्ट करते हुए 8 से 10 एक्सपोजर्स a child can take. And another concept which is also very important is कि breastfeeding के दौरान और even pregnancy के दौरान जो चीज़ें मदर खाते हैं उनका टेस्ट बच्चों को मदर से मिल जाता है, and ultimately their preference for these foods is more. So mothers also have to take care of what they eat. And ultimately it's said that children don't do what you ask them to do, they do what you do. तो उनके सामने जो आप खाएंगे, जो करेंगे, they'll follow you. So this is very important क्योंकि fussy eaters is a very important concept. बहुत सारे mothers का concern रहता है. Here I'll also like to discuss an important aspect of nutrition, which is malnutrition, not malnutrition. अब हमारी कंट्री में malnutrition कम हो रहा है, मतलब अंडर न्यूट्रिशन कम हो रहा है और malnutrition ज़्यादा हो रहा है. कि मॉल से फास्ट फूड एंड फिंगर फूड एंड रेडीमेड फूड जिन पे स्पेशली लेबल्स लगे होते हैं कि ये अच्छा खाना है या ये हेल्दी खाना है और बच्चे के लिए हेल्दी है,
fascinating kind of labels and डिब्बे देख के mothers and parents think कि अगर हम ये बच्चे को देंगे तो उनका growth अच्छा होगा, which is totally false. Simple घर के खाने, homemade foods, local foods are far better than these dazzling foods and cans and ready-made foods. Definitely. So it doesn't at all mean कि खाना महंगा होगा या कोई भी चीज़ महंगी होगी तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्दी है. No, that's it doesn't work that way. सिंपल घर का खाना बच्चे को अच्छा ग्रोथ दे सकता है और वही अच्छा ग्रोथ देता है. सो आजकल जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन है वो ये है कि बच्चे को ओबीज नहीं करना है. यू डोंट मेक हिम ओवरवेट. आजकल ओवरवेट होने से बच्चे के लेटर ऑन इन लाइफ डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट डिजीजेज, ये सब बीमारियां बहुत जल्दी आनी शुरू हो गई हैं अर्लियर ऑन इन लाइफ, 30s में, 40s ऑफ ईयर्स ऑफ एज में. सो डोंट थिंक दैट इफ यू आर मेकिंग योर चाइल्ड chubby he is healthy. Chubby child प्यारे हो सकते हैं but they're not healthy. So you just have to maintain them in a good side of the normal weight. You don't make them overweight. This is also very important. And of course we don't want them to be underweight. That's why I discuss so many things that we can give to our children. So अब हम बात करेंगे कि what are the recommendations about salt, sugar, and oils in children, because this is something which almost everyone discusses when they come to our OPD. So, salt generally is not recommended much up to 1 year of age, and same for sugar. बच्चे को कोई benefit नहीं होता है. Some amount of jaggery is okay, and salt can put load on the kidney, so it can be avoided. And oils may, you of course give some healthy oils. Unsaturated fatty acids can be given. Even some amount of saturated fats is good for the child. It needs uh, uh, to be given to the child to make the hormones for the child. So desi ghee, butter, olive oil, these all kind of oils can be given to the child वो बच्चे की development में help करते हैं. You can just add half a teaspoon to food and that should be good. So ऐसा नहीं है कि हम oil को बिल्कुल avoid करना चाहिए. Oil is needed ultimately as a part of diet for the child. Important चीज़ एक और डिस्कस करनी रहती है complementary feeding में, which is do we need to supplement our children with vitamins and other things? Now it depends on the condition of the child. India में of course vitamin D deficiency 97% बच्चों में है. So vitamin D supplementation is recommended by government, 400 units per day to the children even who are breastfed. और अभी जो लेटेस्ट स्टडीज़ आई गई हैं उनमें ये भी देखा गया है कि जो पेरेंट्स अच्छी रिच फैमिलीज से भी बिलोंग करते हैं और बच्चे को हर तरह का खाना खिलाते हैं, पूरा भर भर के खाना खिलाते हैं, उनमें भी 70% बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है. एंड ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन हु बिलोंग टू लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास have iron deficiency to a much higher tune. So iron supplementation after 6 months of age is a good option for a better development and cognitive function of the child. And so 1 to 3 milligram per kg per day is the recommended iron supplementation above 6 months of age. And then a role of DHA is upcoming. DHA 0.32% and arachidonic acid 0.64% बच्चे को supplement किया जाए. Then the neurodevelopment, visual acuity, the intelligence of the child is better than otherwise. So these were a few recommendations which we had to discuss about the supplements that we can give to our children, because बहुत सारे mothers का एक concern रहता है कि क्या किया जाए. So otherwise of course the best thing for the child is not just the supplements. 99% of the things are covered up only by good feeding practices. अब good feeding practices में the most important thing is hygiene. जितना फूड हाइजीनिक होगा उतने इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम रहते हैं एंड उतना ही बच्चा ग्रो बेस्ट करता है. So these were a few things that we needed to discuss. अगर बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा है तो उसके ग्रोथ पैरामीटर्स अच्छे होते हैं. हेयर इन अ पोलो
as always, I always make it sure that any child who comes to me, we do his weight, height, head circumference, so that we know कि बच्चे का ग्रोथ कैसा जा रहा है. So ultimately, the growth of child is the best indicator of the nutrition of the child. So that is it. I hope we learned a few things and we covered up a lot of questions that are generally asked to us in the OPD. And it was lovely interacting with all of you. If you do have any questions, you can post them and we'll try to answer them. Thank you, and do take very good care of yourself and of the nutrition of your child. Thank you.